Currently there are a lot of beauty brands in the Indian market जो बहुत अच्छे और affordable makeup products बनाते हैं which are specifically made for Indians or Indian skin tone. Few months back I tried a few products by the brand Mila Beauty, which if you're not aware of is an Indian brand and it is super affordable. मैंने काफी सारे products उनसे purchase किए थे. I specifically bought lip products from them and मैंने 2 set of products already review कर लिए हैं इस particular brand के. I have talked about their Pout It Out lip crayons and मैंने इनका जो मिनी लिपस्टिक सेट आता है वो भी रिव्यू किया है. एंड आई वोंट लाई, मुझे जो लिप क्रेयॉन्स थे वो कुछ खास अच्छे नहीं लगे थे, बट आई डिड लाइक देयर मिनी लिपस्टिक कलेक्शन. सो आज की वीडियो वुड बी अबाउट अनदर लिप प्रोडक्ट जो कि मैंने अगेन कुछ मंथ्स पहले परचेज किया था, but I never got a chance to talk about it. So in today's video we would be talking about Mila Beauty's Gloss Girl High Shine Lip Glosses. Hello everyone and welcome back to my channel. So ये जो particular Mila Beauty के High Shine Lip Glosses हैं, they are available in 10 different colors and इनका retail price is just 249 rupees for 2.8 ml of product. 10 different shades हैं to choose from and I have 3 different shades with me. Now to be honest, these are the lip glosses जिनकी वजह से मैंने Mila Beauty के products परचेज किए थे. आई सॉ सो मेनी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्यूटी क्रिएटर्स ट्राइंग दीज लिप ग्लॉसेस एंड टू बी ऑनेस्ट आई फेल इन लव विद द पैकेजिंग. इतनी सुंदर पैकेजिंग है इसकी, इतने सुंदर ये लगते हैं देखने में दैट आई रियली वांटेड टू गिव देम अ ट्राई, बिकॉज ऑफ विच मैंने मिला ब्यूटी के ये पर्टिकुलर लिप ग्लॉसेस और बाकी कुछ और लिप प्रोडक्ट्स परचेज किए थे एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई गिव मिला ब्यूटी a try and I gave these particular lip glosses a try. So सबसे पहले let's talk about the packaging. So as you can see, packaging is something जिसकी वजह से मैंने ये product purchase किया था. मैंने इस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स को चांस दिया था एंड आई एब्सोल्युटली लव द वे दे आर पैक्ड. इट सीम्स टू बी अ रेगुलर लाइक प्लास्टिक बॉटल, बट इसकी जो डिटेलिंग है, छोटी छोटी चीजें हैं, जो कर्व्स दिए हुए हैं या फिर जो इसका जो कैप है उसके ऊपर जिस तरीके का शेप है, आई समहाउ फेल इन लव विद इट. आई वुड से कि ये बहुत लग्जूरियस या बहुत हाई एंड लगता है, लाइक 249 रुपीज में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे पैकेजिंग से, बट येस दिस इज प्रिटी स्टर्डी. एंड इवन अगर हम इस पर्टिकुलर लिप ग्लॉस की वॉन्ड की बात करें, सो दैट इज ऑल्सो लाइक अ डो फुट एप्लीकेटर, लेकिन इट इज अ लिटिल flatter as compared to the other doe foot applicators and yes, it makes the product pretty convenient to apply. So yes, that's about the packaging. The name of the shade is pretty visible on the bottom of the lipstick, but again these are like transparent lipsticks, so आप शेड बाहर से भी देख सकते हैं कि exactly आपको कौन सा चाहिए. You don't actually need to look at the name of the shade. So yes, that's about the packaging. Now let me quickly swatch the 3 colors that I have with me and उसके बाद हम बात करेंगे कि how exactly do I feel about these lip glosses. So let's get started with the very first shade, which is called Naked. This is how the shade looks like. It is a beautiful warm neutral sort of a color जिसको आप with or without makeup apply कर सकते हैं. If you have a medium to darker skin tone, this particular color might not suit you on its own, so उसके लिए आपको एक darker lip liner apply करना पड़ेगा. But as far as I am concerned, I do like how this color looks on me, specifically when I do have makeup on. So yes, this is how the shade 02 Naked looks like. Now the second shade that I have with me is 03, which is called Not Today. It is again also a warm nude sort of a color, लेकिन ये थोड़ा सा darker है पिछले वाले color से. So if you are medium to dark skin girlies और अगर आपको 02 जो shade है वो suit नहीं कर रहा है, then you can definitely go for the shade 03, which is Not Today, and you can apply it over a lipstick to give a little bit more shine and color to your lips, or you can use it on its own. काफी pigmented color है as you can see, and yes, it will look good with or without makeup. Now this third shade that I have with me is shade number 07, which is called Gloss Girl, and it is your regular pink gloss जिसको आप कभी भी apply कर सकते हैं with or without makeup, just to give a little pop of color to your lips and make you look brighter and happy. So yes, this is how
how shade number 07 Gloss Girl looks like. I personally would not pinpoint a certain shade amongst the three that I have कि ये मेरा particular है, because honestly I love all the three shades that I have with me. I use them very often, specifically winters के time में, because glosses हैं, they are hydrating and they do not of course dry your lips. Definitely these are not long lasting enough क्योंकि lip glosses हैं, and whenever you eat or drink something ये transfer हो जाते हैं. But yes, they do moisturize your lips and they do look absolutely beautiful on your lips. इसको आप on the top of a lipstick use कर सकते हैं to add on a little bit of shine or color to your lips. But I personally like to use them on their own. As you can see, these are very pigmented glosses. One single swipe of the product आपको एक sheer to opaque lip color देता है. So if you are somebody जिसको opaque like completely fuller pigmented lips चाहिए, so definitely I would suggest कि आप एक lipstick के ऊपर apply करें. But if you are good with a sheer to medium sort of a pigment, then these lip glosses can be used on their own. Now as I said कि ये transfer proof नहीं है, so ये बहुत ज़्यादा time तक आपके lips पे stay नहीं करेंगे. But the best part is you can easily reapply them throughout the day, maybe a few times, just to keep your lips fresh and hydrated. So yes, that's all about these lip glosses for the price range of 249 rupees. I absolutely love the formula of these glosses. I absolutely love the packaging of these lip glosses. And if you're somebody जो एक pigmented lip glosses ढूंढ रहा है on a budget, then I would highly recommend trying these Mila Beauty's High Shine Gloss Girl lip glosses. So yes, that being said, that's all for today's video. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस मेरे चैनल पे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नमस्ते.